everyone, welcome back to this channel, this side. A new member of Fog TV. My name is Angry Bird and hope you all are fit and fine. How are you all? I think आप मुझे नहीं जानते, but मैं सबको जानता हूँ. मैंने सबके कमेंट्स पढ़े हैं इस चैनल में and मैं आज ये चैनल होस्ट करने वाला हूँ. वन्या अब मुझसे ज़्यादा बोला नहीं जा रहा. प्लीज़ हैंडल इट. प्लीज़ कम वन्या प्लीज़. Hello everyone, welcome back to this channel and this side वंदना. अभी जो था वो एंग्री बर्ड था जो संभाल रहा था. वो सोच रहा था कि मुझसे ज़्यादा सुपर कूल बन सकेगा, बट ऐसा हुआ नहीं. तो फाइनली उसने मुझे दोबारा से बुला लिया. तो आज का हमारा टॉपिक है पिंक मेकअप. आज हम पिंक मेकअप करने वाले हैं. जैसे कि आपने मेरी ड्रेस देखी, मैंने पिंक पहनी हुई है. पिंक ही होगा आज का जो थीम है हमारा. पिंक मेकअप, पिंक एवरीथिंग. सो लेट्स चेक इट आउट. मैंने पिंक लिपस्टिक डैब की है इसके अंदर सो दैट एक पिंक कलर जनरेट हो जाए. एंड आई एम मिक्सिंग this with the both of this and we'll see the result क्या होने वाला है आगे. And I'm super excited and please guys support me. I know this is actually a craziest thing I am doing right now. Just mixing. Pink color is now ready. It is prepared. I think इसमें कलर आपको ढंग से दिख ना रहा हो. इसमें कलर आपको कुछ दिख रहा है बट इट इज पिंक. I'll show you. ये हैंड पे आपको दिख रहा है पिंक शेड. ये पिंक बना दिया मैंने इसको. इसके अंदर मैंने लिपस्टिक ऐड करी and it is now pink. I am applying to my face. मेरा आज का जो इसमें ऑब्जेक्टिव है सिर्फ और सिर्फ पिंक मेकअप का है. I want a pink makeup with everything is pink. अब शायद आपको पता चल रहा होगा कि ये पिंक कलर ही है. वाह, ये तो कुछ अच्छा ही लग रहा है. तो नॉर्मल जो फाउंडेशन है उससे ज़्यादा सुपर कूल लग रहा है ये तो. Now I'm applying this Gigi Hadid. It's a illuminator liquid. This is for the cheek area.
it is giving a 3D look to your eyes. That's why I am applying to my eye area and cheek part. Now I'm applying this lipstick to this area. Hold for a second. इसके लिए मुझे I think proper tool use करने पड़ेंगे. So I'm gonna using this brush. ये ब्रश को थोड़ा सा क्लीन कर लूँ. इसमें डार्कनेस है, पता चले मेरा आज का जो प्लान है वो खराब कर दे. Ooh, super cool. अच्छा लग रहा है. आई डोंट थिंक कि भी ये बुरा आइडिया है. ओह वाह, कुछ टाइम में मुझे लग रहा है पिंक आईब्रो का फैशन हो जाएगा. ना भी हो तो क्या है, मैंने बना ही दिया है. सो फॉलो इट. वाह, interesting, crazy idea. I am loving it and hope you all too loving this pink eyebrow. Oh, mamma mia, my god. I am impressed with this idea. Now we have this kit which is so many shades. I'm gonna choose this pink color. I think this is the best pink shade. Oh my god, ये निकल क्यों नहीं रहा है. स्ट्रगल करना पड़ रहा है मुझे इसके साथ. Ooh, cute. And I'm using a brush to apply it. आपको कलर आई थिंक दिख रहा है, बट मुझे मेरे हिसाब से बहुत डार्क हो रहा है. सॉरी, लाइट हो रहा है कलर. आई नीड सम डार्कनेस. ओके, आई एम मिक्सिंग टू कलर्स एंड देन विल सी क्या कलर बनता है. Woo! Super cool. Super duper cool. Now it is visible properly with 3D look. And apart from that, I'm applying a lipstick which enhances overall makeup.
Oh wow, super cool. और प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताओ कि किस तरीके की लगी ये वीडियो। थोड़ी इसमें पागलपंती भी है कि सब कुछ पिंक। बट जो सब कर रहे हैं वो हम क्यों करें? थिंक डिफरेंट, थिंक आउटसाइड द बॉक्स. Ooh, my soup, my goodness, this is actually cool. I really like this thing which I'm developing today. A pink makeup. And hold for a second, I'm applying a blush to my cheek area जो कि बाकी की कमी पूरी कर दे. Hold on, I am using a brush, small brush. Ooh la la. And one thing is missing जो कि है काजल. Pink lipstick, pink blush, pink eyebrows, and pink kajal is pending. So I'll apply using this lipstick because I don't have any other option now. So I'm applying. Oh wow, this is super cool idea. I'm proud myself. Even I believe you can also try this thing at home. It really works good. Ooh. Wow, super cool. And this is the pink winged kajal. And I think I need to add something here, a darker color, so that it enhances my eye area. So I'm gonna use something darker in pink shade. So this is the, I think, perfect one. Cool. And ooh, darker pink is here. I'm applying. Oh, now it is completely visible. Yes, perfect. This thing I want. And I'm little gonna do a contouring part from this pink color. Don't mind, excuse guys for this craziness.
Wow. See, this is my first time, so please ignore if something is missing or something you feel that ये ऐसा नहीं होना चाहिए था. So please excuse for that, because I'm gonna upload this complete without editing. So you'll get a real version, real edition of my video. Oh my gosh. So I'm smudging this. I think it's a super cool idea. मुझे नहीं लगता कि ये मेरे साइड से कोई बैड आइडिया था या मैंने कुछ गलत ऑप्शन चूज किया बनाने के लिए. इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग. Oh my god, it is seriously super cool and something very, very different kind of thing which I am doing in front of you, and I am really enjoying it. एंड इसके अलावा आई थिंक मुझे इसके बीच के अंदर एक लाइट शेड भरना पड़ेगा क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट पिंक कलर. सो मैं इसमें ज़्यादा और कलर्स नहीं लूँगी. Wow! And contouring part is almost being done. So I'm done with this makeup, and this is the real version of pink makeup. So hope you like this video, and I'm gonna show, see this, my pink eyebrows, my pink eyeliner. I'm gonna focus it, and pink contouring, and pink foundation, pink lipstick, pink eyebrows, pink kajal, pink everything, and I'm looking super cool, super creative personality today. I seriously enjoy a lot with you guys, and hope you like my channel. So don't forget to subscribe, like, share and comment, and hit the like button if you like my efforts, and see you in next video.